हेलो इंडिया। मैं सैयद मोइनुद्दीन दिल वालों की दिल्ली से आप लोगों के सामने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूं जो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी फंड करती है उसे। और आज रविवार फरवरी 20 और 2022 और मेरी को होस्ट हैं मिस कैट जेकब्स, जो कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के हेड ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन मैनेजर हैं। और मैं हेड ऑफ सेल्स और कम्युनिकेशन मैनेजर हूं SWC इंडिया के लिए। तो आइए ये खूबसूरत शाम हम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इन्फो सेशन के नाम करते हैं। मिस कैट जेकब्स यहाँ से टेक ओवर करेगी और मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। थैंक यू। मिस कैट जेकब्स, यू कैन टेक ओवर। Thank you. So hello, I'm Kaat Jacobs, the communication manager, and thank you, Said, for introducing me. Now, please introduce yourself. मिस कैट से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, और वो SWC के हेड ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन मैनेजर है, और वो मुझे अपना को होस्ट बनाना चाहती हैं। वो जो भी कहेंगी मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा यहाँ से। आइए अब मेरे बारे में जानते हैं। हु इज सैयद? सैयद कौन है? हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन द यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट। ए ईयर बैक, साल भर पहले इट गॉट मुझे अपनी जिंदगी में घूमना और खोजना बहुत पसंद है, और साल भर पहले इस पर मेरी नजर पड़ी और मैं इससे आकर्षित हुआ, और मैं इससे दूर नहीं रह पाया। आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भारत में एक नए परिवहन की जरूरत है। मुझे थोड़ा सा वक्त लगा इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। आखिर ये है क्या, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। यह एक नए परिवहन के साथ ही साथ मेरे छोटे से परिवार का आर्थिक सुरक्षा भी देता है। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं भारत के सभी भाई और बहनों के सामने इस अनोखे मौके को लेकर आना चाहता हूं। Okay. मुझे बड़ा ही गर्व। Oh, sorry. You finished? There was a last line. Sorry. मुझे बड़ा ही गर्व और सम्मानित महसूस हो रहा है कि मैं SWC के कार्यक्रम का साथी हूं, जो मिस कैट जेकब्स के नेतृत्व में चल रहा है, जो कि SWC के प्रमुख संचार और प्रबंधक भी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये एक सबसे अनोखा अवसर है आपकी जिंदगी में आया है। इसे जाने मत दीजिए, और मेरी बिक्री या फिर मैं इसको कोई एक अपना सेल्स टेक्निक नहीं बनाना चाहता हूं। You can go to the next slide, Miss Kat Jacobs. I have done with my introduction. Okay, good. Well, since Mr. Said introduced himself, I will introduce the board members of SkyWorld's community. We have 5 board members, and you can see the first one is Evgeny Kudryshov. This is our financial director. Then we have Irina Volkova. She's an engineer, and she was there from the beginning. 6 years ago, when there was still nothing, she started with the project, and she's taking care of all the communication people of every communication responsible persons of every country. And then you have Mr. František Solar. He's a businessman and an engineer, and together with Dr. Maslov, they travel a lot around the world.
to see the startup projects, and then Alexei Shukodiev, sorry, is also an engineer, and he specialized in blockchain and all the things about leads and internet, and it's always very fun to have him with us, and maybe next time he will be with us. Go ahead, Mr. Saeed. Yeah. मिस कैट जेकब्स ने स्काई वर्ल्ड के जो भी जितने मेंबर्स हैं सभी को इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें 5 बोर्ड मेंबर्स हैं। सबसे पहले आते हैं एवजीनी कुर्दिशोव मेंबर जो कि फाइनेंशियल डायरेक्टर है, इरिना वोल्कोवा मेंबर जो कि इंजीनियर है और ये 6 साल से इसमें जुड़ी हुई है और इनका बहुत योगदान है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में। और फ्रैंक स्ट्रिक्स सोलर मेंबर, ये एक बिजनेसमैन और साथ ही साथ इंजीनियर भी हैं। डॉक्टर व्लादिमीर मास्लो मेंबर, ये लॉयर और डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। अलेक्सी सुखोदोयेव मेंबर, ये इंजीनियर हैं। ये बहुत ही फन है और इनका भी बहुत योगदान है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में। You can take over, Ms. Kat. Okay, and then so what is SkyWorld's community? SkyWorld's community is a crowdfunding platform that offers people 2 options. That offers people the option of convertible loan, and you have 2 options, or you can become a co-owner, or you can of the Unitsky String Technology, and I tell you more about that, or you can have your money back after 3 years with 4% interest. On the platform, you can become an investor or co-owner. You can become an active member, and we call it partners, or as me, you can be both. Okay, Saeed, take over. SkyWorld कम्युनिटी क्या है? SkyWorld कम्युनिटी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है और डेवलपमेंट ऑफ यूस्काई इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के लिए एक निवेशक प्रभावी एक परिवर्तन पूर्ण समझौते में प्रवेश करते हुए स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का फंड ट्रांसफर करता है। Yes. एक एसडब्ल्यूसी भागीदार बने और अंतरराष्ट्रीय तकनीक स्टार्टअप के विकास का समर्थन करें, निवेश और साथी भी बने। You can take over, Ms. Kat. Okay. You tell the people about the convertible loan, yeah? Yeah, I missed. और इसमें कन्वर्टिबल लोन्स का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो 3 साल तक कंपनी में रुक के आप इस लोन के साथ एग्जिट कर सकते हैं 4% के साथ, या फिर आप कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़कर इसका फायदा उठा सकते हैं। Okay, thank you. What is USky? What is this technology? Why are we putting so much time and energy in it? Well, it is an innovative transportation system, completely new, it means, and it is moving above the ground. So that means no traffic jam. It is very, very environment friendly, and it can be built anywhere. Take over. यूस्काई क्या है? यूस्काई अभिनव परिवहन है जो उच्च शक्ति स्ट्रिंग रेल पर जमीन से ऊपर चलता है और ट्रैफिक जैम्स नहीं है। ट्रक Yes, no pollution, and we can build anywhere. Yeah. ट्रैक संचार जमीन से ऊपर है और इसका पोल्यूशन भी बहुत कम है, कोई प्रदूषण नहीं है इसमें। परिवहन वायुमंडल के प्रदूषित किए बिना बिजली द्वारा संचालित होता है और इसके लिए कोई बॉर्डर्स सीमाएं नहीं है। स्काईवे को किसी भी जलवायु के साथ किसी भी इलाके पर बनाया जा सकता है। You can take over.
Okay. And we all know that the modern transportation is facing challenges by nature. You can take over. और हम सब ये जानते हैं कि आधुनिक परिवहन में बहुत सारी समस्याएं भी हैं. You can take over. And then also we ourselves made a big mess. Can't say different. We have big transportation problems all over the world. Take over. और कार्गो यानी मालगाड़ियों के जरिए से हम लोगों ने खुद से इतना ज़्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ है और ये हमारे लिए ही मुसीबत बनी है. And we have a hassle-free and clean way to solve the transportation problems all over the world, passenger and cargo. Take over. Next slide. Next slide, Ms. Kaat. This is over. Next slide. और इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कार्गो और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. You can take over. Thank you. And I know, and I'm sure, I'm 100% sure that there is no effective solution at this moment in the world, and I will tell you why. Take over. अभी जो मौजूदा ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जो कि सुविधाएं हैं, उससे बेहतर सुविधा हमारे पास है और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं. You can take over. You see me here in the port of Antwerp, that is in Belgium. That is my home country, and Antwerp is one of the biggest ports in the world, and they have major transportation problems with cargo. You can take over. और यहाँ पे इस तस्वीर में आप मिस कैट जैकब्स को देख सकते हैं, जो कि एक इंजीनियर और एक पोर्ट के वहाँ के इंजीनियर के साथ बैठी हैं, जो कि दुनिया का एक बड़ा पोर्ट है जो कि बेल्जियम में है, और बेल्जियम मिस कैट जैकब्स का अपना मातृभूमि भी है. और वो 12 साल से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था, और उस सोल्यूशन को यूनिस्की ने सॉल्व किया. You can take over. Yes, and they didn't find solution the last 12 years. So a big port like that in the world didn't find a transportation solution for the last 12 years. Can you imagine what the other ports are facing? Take over. इस पोर्ट ने 12 साल से बहुत सारी मुसीबतें झेली थी, और ये दुनिया में एक सबसे बड़ा पोर्ट भी है जो कि बेल्जियम में है. और आप सोच नहीं सकते कि 12 साल से वो इस मुसीबत को झेल रहे थे, और उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए यूनिस्की. You can take over. Okay, so what does Unitsky offer us? Take over. तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे यूनिस्की क्या पेश करता है हमें. We have a lot of we created a lot of passenger and cargo transportation in the last 6 years. If you realize that a normal brand like Mercedes or Porsche or BMW creates one vehicle in 6 years, from the design till the end product, and we produced more already 14 different vehicles for passenger and transportation. And it started with the Unibike and the Unibus, and then we grew and grew and grew. Take over. Mr. Said. कार्गो और यात्री परिवहन के लिए सरलीकृत समाधान. आप जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं और डिजाइन्स देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स और डिजाइन्स और व्हीकल्स ये 6 सालों में बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग पैसेंजर, यात्री और कार्गो यानी मालगाड़ी. अगर आप एग्जांपल लेना चाहें
तो एक कोई भी लग्जरी ब्रांड की कार हो, जैसे BMW, मर्सिडीज, पोर्श, ये 6 साल में एक कार बनाते हैं, डिजाइन से लेकर एंड प्रोडक्ट तक। लेकिन हम लोगों ने 6 साल में 14 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि यात्री और मालगाड़ी, ये सारे के सारे डिजाइन 6 सालों के अंदर बनाए, और एक अद्भुत आविष्कार है। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया था यूनिकार और यूनिबस से, और अब हमारे पास 14 प्रोडक्ट्स हैं। You Okay, can this take is, over. yes, this is the Unibike and this is the Unibus. इससे पहले And जो आपने देखा वो है यूनिबाइक, और ये दूसरा है यूनिबस का डिजाइन। yes, and these are real pictures. You see them hanging on the trucks. और ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये असल जिंदगी में मौजूद हैं, जो कि अभी फिलहाल ट्रैक से जुड़े हुए हैं। And here is the Unicar, special for tropical. This is a tropical vehicle for tropical environments. For example, for a lot of moist and sand that can be lethal for transportation technology. और ये जो आप देख रहे हैं, ये है यू कार। ये एक ट्रॉपिकल व्हीकल है, जो कि सैंड यानी मिट्टी और स्नो, इसके लिए बहुत No ही snow. No. This is the tropical one. ये एक ट्रॉपिकल कार है, जो कि सैंड इसके लिए बनाई गई है, और एक लीथल के जरिए जो भी मुसीबतें आएंगी उन सब चीजों से बचा कर ले जाएगी। And high humidity, also for high humidity. ओके, और हाई ह्यूमिडिटी से भी आपको बचाता है, मतलब अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो आपको महसूस नहीं होने देगा बाहर की गर्मी क्या है। Yes, and this is a triple one hanging on the tracks. और ये ट्रिपल यूनिकार है, जो कि अभी ट्रैक से जुड़ा हुआ है, और ये भी एक असल जिंदगी में मौजूद है। And this is the Unitruck. The Unitruck is a transportation vehicle that was designed especially for loose cargo. It can load and unload in 3 seconds. और ये एक यू ट्रक है, ये ज्यादातर कार्गो के लिए इस्तेमाल होती है, मालगाड़ी जैसे, और ये लूज आइटम को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और ये लोडिंग और अनलोडिंग 3 सेकंड में करता है। And here is the real picture. और ये भी एक रियल पिक्चर है, ये भी असल जिंदगी में मौजूद है, जो ट्रैक से अभी जुड़ा हुआ है। Okay, then we have the Unitrans. This is specially to load and unload containers, ships in a very ecological and very fast way. और ये यूनिट्रांस है, और इसमें कंटेनर्स को लोडिंग और अनलोडिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और जितना भी शिप्स के जरिए से माल आता है, बहुत ही फास्ट, दुगनी रफ्तार से ये लोडिंग अनलोडिंग कर सकता है। Then the smallest of them all, this is the Uniwind. This I will tell you a story about it. This can be built anywhere, and how? You see the picture next to it. This is a drone as big as a helicopter, and it is remote controlled, so no pilot. This one can lift 1 ton, so it can lift this anchor, can put anywhere in the world without damaging the environment. And then the engineers and builders, they will come with another with a real helicopter, and then put the anchors in the ground, seal it in the ground. So this Uniwind can be built in the most remote areas. Okay, take over. अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भी असल जिंदगी में मौजूद है, और ये सबसे छोटा व्हीकल है, इसका नाम है यूनिविंड। और इसके बगल में आप एक जो हेलीकॉप्टर जैसा जो एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक ड्रोन है। ये ड्रोन 1 टन जितना वजन उठा सकता है। जो आप यूनिविंड की जो तस्वीर में जो एंकर दिख रहा है आपको, एक ए शेप का, उस एंकर को ये कहीं भी उठाकर दुनिया के किसी भी कोने में रख सकता है, और ये कितना भी रिमोट एरिया हो वहां भी बिल्ड कर सकने की कैपेसिटी है। और ये एक रिमोट कंट्रोल ड्रोन है, और जहां भी ये एंकर ले जाके रखेगा, वहां पे सिर्फ इंसानों को हेलीकॉप्टर के जरिए से वहां पे ले जाना है, और उसको फिटिंग के लिए उसके बाद आप एंकर फिट हो जाएगा।
Okay, and then we have the U-Flash, or the high-speed bus. This is a design, and this is a real picture. You see me here sitting in the vehicle, and this was on the Unitrans. This was a professional, the biggest professional transportation fair in the world. And there is a very funny story. When we entered this vehicle covered with a veil, a white veil, everybody thought that we were bringing in a racket. So that is very, very, very funny story. And this vehicle had a lot of success in the Unitrans, the fair. Okay, take over. और यहाँ पे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि यू फ्लैश, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी असल जिंदगी में मौजूद है. यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड. और ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये असल जिंदगी में मौजूद है. ये इनोट्रांस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक एग्जीबिशन है, तब इसको अनवेल किया गया था. इससे पहले इसके ऊपर एक चमकती धारी से इसको बंद करके रखा हुआ था. तो सब लोगों ने सोचा कि एक रॉकेट है. एक मजाक का सिचुएशन बन गया था. जब इसको अनवेल किया गया तो सब लोग इसे देखने के लिए के उमड़ पड़े इस पे कि इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है. और आप मिस कैट जेकब्स को देख सकते हैं जो अंदर बैठी हैं, और ये असल जिंदगी में मौजूद है. इट्स नॉट जस्ट पिक्चर. Okay, and then the next one is the Unicorn. Unicorn is specially designed for containers. It was done during the pandemic because the country where our factory was not shut down. And I'm very glad because this will help to give the solution to the big transportation problems of cargo. And here you see it on the tracks in Belarus and in Sharjah, and you see our engineers working on the chassis. Take over. और ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है यूनिकॉर्न. ये कंटेनर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा मदद आता है. और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये भी असल जिंदगी में मौजूद है. प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड. जो कि आप इस वाले तस्वीर में देख सकते हैं. यूनिकॉर्न ये शारजा यूएई में मौजूद है, जो कि ट्रैंक से टंगा हुआ है. और इसके नीचे वाली तस्वीर में जो है वो बेलारूस में वो भी मौजूद है. और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे इंजीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं. और ये यूनिकॉर्न तब बना था जब पैंडेमिक चल रहा था. उस दौरान में यूएसटी कंपनी बनी हुई थी, वो चालू थी. टेक ओवर. So what is the secret? How does it work, this technology? Take over. तो यहाँ पे हम जानेंगे कि यूज का क्या है और ये कैसे काम करती है. Let me reveal you the secret. You see here the rail. This is a normal metal rail, yeah? And this metal rail is filled up with flexible concrete. This is a patent of the CEO. This flexible concrete makes sure that the rail that normally breaks will not break, yeah? A metal rail normally breaks. For example, metal rails of train tracks or bridges, even bridges, yeah, they break. This will not break because of the flexible concrete. And the advantage of the flexible concrete is it also absorbs sound. Take over. और आइए अब हम इसका रहस्य जानेंगे. जो ट्रैक्स है उसका रहस्य जानने की कोशिश करेंगे. ये आप जो मेटल बॉडी देख रहे हैं इसमें ये जो एक लोहे का ढांचा है जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबल कंक्रीट फिल हुआ है. ज्यादातर क्या होता है रेलगाड़ी या फिर आप ब्रिजेस देखो तो वो एक सॉलिड लोहा होता है जो कि बहुत जल्दी टूटने के चांसेस होते हैं. ये एक फ्लेक्सिबल कंक्रीट होने की वजह से ये साउंड को भी ऑब्जर्व करता है और इसका कंपन होने से रोकता है. टेक ओवर. Okay, then you see here these white dots.
These are not white dots, these actually are strings. Remember, string technology. So these strings are metal strings wrapped around each other so the rail can bear very heavy load. For example, we can transport 60,000 people in 1 hour. Take over. और आप जो ये सफेद जो डॉट्स देख रहे हैं इसमें, ये एक रियल स्ट्रिंग्स हैं जो कि यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में बने हुए हैं, और ये सारों को सारे एक साथ मिलाकर उसको बांधा गया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सके और ये ट्रैक को स्ट्रॉन्ग रखे, और ये 1 घंटे में कम से कम 60,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखता है. टेक ओवर. Okay, then on top you see there's something special on top. Well, this is also a patent of our CEO, and this is a special combination of metal, and the wheel is also covered with it. When the wheel drives over this metal, then there will be almost no friction, so that means no sound, and the vehicle doesn't need extra fuel because there's almost no friction. So this is very unique. Take over. और इसके ऊपर का जो आप एक कवच देख रहे हैं, ये लोहा नहीं है, लोहे जैसा एक मटेरियल है जो कि ये फ्रिक्शन को कंप्लीटली जीरो लेवल पे रखता है, और सीसी मटेरियल का व्हीकल्स के व्हील्स भी बने हुए हैं जो कि व्हीकल्स को स्मूथली मूव करने में ज्यादा मददगार साबित है, और इसमें फ्रिक्शन भी कुछ भी नहीं है और ना ही इसमें आवाज आती है. टेक ओवर. And of course we can also transport other things, so as cables or you know, internet cables or other things. Take over. और इसके साथ ही साथ इसके नीचे वाले तस्वीर में जो आप 2 पाइप्स जैसे दिख रहे हैं, उसमें चाहिए तो इंटरनेट के केबल्स वगैरह भी सप्लाई करने की ये है, सुविधा है. Okay, then the string technology, the rails are specially anchored in the ground, actually doubled anchor. You see the A and the B, that's the normal anchors, like a bridge is built, and then the rails are double anchored. You see the red arrows, these are the double anchors. That means that the ride is 5 times smoother and the rail is 3 times stronger, and we can build anywhere, above water, above mountains, and above valleys. Take over. आप जो इस तस्वीर में जो रेल, स्ट्रिंग रेल का जो ये देख रहे हो, एग्जांपल देख रहे हो, ये डबल एंकर्ड है. कहने का मतलब है कि ज्यादातर ब्रिजेस क्या होते हैं, सिर्फ एक तरफा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इस एंगर को दोनों साइड से जोड़ा गया है जो कि आप लाल एरो के जरिए से उसको पहचान सकते हैं, और ये इसकी क्षमता बढ़ा देता है. 5 गुना ज्यादा स्मूथ और 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और इस चीज को हम कहीं भी किसी भी हाल में किसी भी सरफेस पे बिल्ड कर सकते हैं, पानी, पहाड़ हो या फिर कोई वैलीज, ये वाले सरफेसेस पे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं. टेक ओवर. And we have 3 sort of tracks. We have the flexible one, and this is built in remote areas. The distance between the 2 anchors can be 5 kilometers. Imagine 5 kilometers from where you sit now. That's a very, very far distance. So this can be built, for example, in a valley or over a top of a mountain. Yeah, so remote areas. Then you have the rigid one. The rigid one is specially built for heavy load. You see, it's a double rail, and for example, a lot of people or a lot of cargo in between cities, big cities, or from a big city to a airport or a port, for example, for cargo. And then the last one is semi-rigid, and this is, you can compare it with a train or a tram or a metro, but then it is in the air and the views are amazing. Take over. अब जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें
तीन अलग अलग किस्म के ट्रैक्स हैं। जो सबसे पहले जो नीचे है, ये एक फ्लेक्सिबल ट्रैक है। ये रिमोट एरियाज में बनाने के लिए काम आता है, और इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में बनाया जाता है, दो अलग अलग एंकर्स। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं। और दूसरा जो आता है वो है रिजिड, जो कि कार को एक शहर से दूसरे शहर तक मालगाड़ी वगैरह पहुंचाने के लिए काम आता है, और साथ ही साथ एयरपोर्ट से और बाकी बंदरगाह से भी आप चीजों को पहुंचा सकते हैं। ये ट्रैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा सख्त साबित होते हैं शहरों के बीच में ट्रैवल करने के लिए। और तीसरा जो है इसमें सेमी रिजिड। सेमी रिजिड जो है, जो आप एक रेलगाड़ी या फिर ट्राम्स, इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं, जो कि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में काम आता है। यू कैन टेक ओवर। And you see every track, every rail has the metal frame and then the flexible concrete and then the dots. Yeah, the metal frame, flexible concrete and the dots. Here also metal strings and then the flexible concrete. Take over. इस तस्वीर में आपको तीनों चीजें जो असल जिंदगी में मौजूद हैं, ट्रैक्स, उसको दिखाया गया है, जो कि सेमी रिजिड, रिजिड और फ्लेक्सिबल। तीनों के लोहे का जो ढांचा है उसमें फ्लेक्सिबल कंक्रीट है, और जो स्प्रिंग्स हैं उसको से एक साथ लपेट कर बांधा गया है। फ्लेक्सिबल में भी है, रिजिड में भी है, और सेमी रिजिड ट्रैक्स में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब ये सेफ भी है और स्ट्रॉन्गर भी है। थैंक यू, टेक ओवर। Okay, and then the heart of the technology, it is a very unique and a patent of our CEO, a new engine that can run on any environment friendly fuel. Take over. और इस तस्वीर में जो इंजन दिखाई गई है, ये एक यूनिक टेक्निक और इससे बनाई गई है, जो कि एनाटोली यूनिट्स्की ने बनाया हुआ है, और ये एक नेचर फ्रेंडली भी है। ये किसी भी तरीके का मीथेन, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स पे चल सकता है, ईंधन पर चल सकता है। टेक ओवर। So what are these advantages of this transportation? Take over. तो चलिए जानते हैं इन सब के फायदे वाली चीजें क्या क्या है। टेक ओवर। Well, I will tell you one of the advantages, and there are many. First of all, you have the aerodynamics, and aerodynamic is expressed in CX. A normal car, the air gets trapped underneath the vehicle, and then it gets underneath it, and it swirls around at the back, so it pulls the car a little bit backwards, so the car needs extra fuel. The same here with Formula 1 car. The CXs are much better, but still it has the swirling at the back. You see the air gets trapped. Take over. और इस तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स CX के जरिए से कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमीन पर एक कार है, उसके नीचे से हवा गुजर रही है, तो हवा उस कार के नीचे बंधी रह जाती है, और पीछे जब वो हवा निकलती है तो वो अपने एक जुल्फ बना लेती है, जो कि कार को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकती है, और वो है 0.4। और उसी तरीके से फॉर्मूला A1 में भी देख सकते हैं कि हवा कार के नीचे फंस जाती है, और जब पीछे से निकलती है तो वो भी अपना एक जुल्फ बनाती है, जिसको स्पोल कहते हैं। जुल्फ बनाने की वजह से कार क्या होती है, जितनी क्षमता से वो आगे बढ़ना चाहती है वो नहीं बढ़ पाती है, रोक जाती है। लेकिन ये वाली चीज यू फ्लैश में नहीं है। और यू फ्लैश क्या है, ऑलरेडी जमीन से थोड़ा सा ऊपर है, ट्रैक्स के ऊपर, तो इसमें एरोडायनामिक्स का जो CX है वो 0.06 है। So indeed, the high speed, this vehicle goes 500 kilometers an hour, one of my favorites because I like speed. And so it is hanging in the air, so the air doesn't get trapped, and it is so special shaped that the aerodynamics is 0.06. So if this vehicle passes you, you don't hear it, you don't feel it, and the leaves on the trees will not move. Take over.
और यहाँ इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं यू फ्लैश व्हीकल, ये ऑलरेडी ट्रैक के ऊपर है, और जो ट्रैक जो है वो जो जमीन से ऊपर वाले हिस्से में है, अबोव द ग्राउंड है। तो इसकी वजह से इसमें एरोडायनामिक्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, और ये कम से कम 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। और ये इसका CH है 0.06, जो कि इतनी स्पीड से जाएगा, और हवा को एक्सप्लेनिंग स्टिल, जो कि ये इतनी रफ्तार से जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई व्हीकल गुजरा है। और इसका सबसे बड़े ये चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलेगा। टेक ओवर। So because of these amazing aerodynamics, this unique transportation will use saves up 880 ton fuel each year per vehicle. Take over. और इस तस्वीर में जो दिखाया गया है ये एक यूनिक डिजाइन है, और ये भी एरोडायनामिक्स है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एरोडायनेमिक होने की वजह से 880 टन जितना ईंधन हर साल बचत हो सकता है। टेक ओवर। So that was a lot of information about the technology, and there's still much more. There's space engineer in that and so much more, but I'm going to leave it with this. The only thing I'm going to show you is that it surpasses all parameters of all the other transportation systems. Take over. तो अभी तक हमने जितनी भी जानकारी हासिल करी वो बहुत ज्यादा जानकारी है, और आगे भी और भी बहुत सारी जानकारी है, वो अभी फिलहाल नहीं बता सकते। लेकिन जितनी भी जानकारी हासिल करी है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और बाकी इसके पैरामीटर्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि यूज का कितना फायदेमंद है। टेक ओवर। Okay, so let me compare. The cost to build the Unitsky is very low compared, the capital cost comparing with the other one, train, tram, metros, is very, very low. The operational cost, so that means the maintenance, is also very low. The energy consumption, I told you about the aerodynamics and the no friction with the wheel and the metal, remember, is also very low, but the capacity of transportation, people and cargo is amazingly high. Take over. ये जो पैरामीटर्स हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत बहुत लो है। आप देख सकते हैं इसमें ट्रेन, ट्राम, बस, ट्रक, रेलगाड़ी को कंपेयर करके, और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान है, और एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत बहुत ज्यादा लो है। और बाकी चीजें आप देख सकते हैं कितना हाई दिखा रहा है इसमें, और कैपेसिटी वाइज के हिसाब से हम बहुत ज्यादा कैपेसिटी उठा सकते हैं। टेक ओवर। Okay, and then the two last one, the environment pollution is very low, very important, and also very important, the accident rate is very low, because the transportation is in the air, so it cannot bump into other vehicles, and the vehicles are equipped with AI. Take over. और बाकी के दो जो पैरामीटर्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ये पोल्यूशन बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करेंगे माहौल को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लो प्रदूषण दिखा रहा है इसमें, और साथ ही साथ इसमें जो एक्सीडेंट रेट्स है वो भी बहुत लो हैं, क्योंकि ये सारे व्हीकल्स एक दूसरे को टक्कर मारने से भी बहुत ज्यादा लो रेट पे हैं, तो इस वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत कम होते हैं। टेक ओवर। Okay, so you see here a normal train track. A normal train track without the vehicle costs 22 million the kilometer. Remember this for the next slide. तो यहाँ पे इस तस्वीर में आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें रेलगाड़ी दिखाई गई है,
यहाँ पे बगैर ट्रेन के सिर्फ जो रेल ट्रैक है वो 1 किलोमीटर बनाने के लिए 22 मिलियन पैसा लगता है, 22 मिलियन डॉलर पैसा लगता है। So we are doing very good. The Unitsky is very economically, very high performance, and so the delivery cost is very low, and the delivery time is very high. So economically plus speed is enormous comparing with the other ones. Take over. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे यूस्काई वो बाकी और ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो स्पीड और इकोनॉमिकली दोनों में फायदेमंद है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। डिलीवरी बहुत स्पीड है और इसका कॉस्टिंग भी बहुत लो है, इकोनॉमी प्लस स्पीड। टेक ओवर। Okay, then let's compare the other currently new transportation systems like the monorail, the magnet levitation, and the hyperloop. They are all ecological friendly. That's the whole reason why there are new transportations in the world, but because the current are very polluting. They are all very safe. Yeah, you have the monorail, magnet levitation, and the hyperloop, very safe, very ecological friendly, but they all need a flat ground. And do you realize what it takes to have a flat ground, for example, in the mountains, before you can build the technology? And with Unitsky, we only need some place for the anchors and we can build anywhere. Take over. और यहाँ पे आप यूस्काई को देख सकते हैं, ये 10 गुना सस्ता है। यहाँ पे मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, तो इसी वजह से ये सारे मोनोरेल, मैग्नेट लेविटेशन, हाइपरलूप और यूस्काई को बिल्ड किया गया है। ये सारे इको फ्रेंडली हैं और इसमें अगर आप देखा जाए तो ज्यादातर सभी को फ्लैट ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यूस्काई को फ्लैट ग्राउंड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये कहीं भी किसी भी जगह पर बिल्ड कर सकते हैं, सिर्फ हमें एंकर डालने के लिए जगह की जरूरत होती है। टेक ओवर। Okay, and people say to me, yeah, but the hyperloop goes 1,200 kilometers an hour. Yes, but see the price tag, 100 million and more the kilometer, and Unitsky is only 3 till 8 million the kilometer. Remember what I showed you before? The train, a normal train track is costing 22 million the kilometer. What do you think your government will choose? Take over. और ज्यादातर में मुझे ये सवाल सुनने को मिलता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे ये है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, लेकिन आप हाइपरलूप को देखोगे तो ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये 1 किलोमीटर रेल ट्रैक बनाने के लिए 100 मिलियन लगते हैं, और जहाँ की यूस्काई का 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाने के सिर्फ 3 से 8 मिलियन डॉलर लगते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि कैसे एक रेलगाड़ी का सिर्फ पटरी बनाने के लिए हमें 22 मिलियन डॉलर लगते हैं। टेक ओवर। Okay, now that was all about the technology. Who designed this technology? Let me introduce you. Well, sorry, take over. बस अभी तक के लिए टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ही था। अब हम जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया, जो हमारे ऑथर और डिजाइनर भी हैं। टेक ओवर। Let me introduce you Dr. Anatoly Unitsky Eduardovich. This man is a genius. He has 150 inventions on his name. Inventions. Realize, let it sink in. How many inventions do you have on your name? He has 150 inventions, new inventions. He wrote 20 monographies, that means 20 books, and 200 scientific papers. If this man would be an actor, he would be world famous, and he is famous in the engineer and scientific world. This is a space engineer. Take over. और ये है हमारे सीईओ और ऑथर और डिजाइनर मिस्टर एनाटोली यूनिट्स्की। इनके नाम पर 150 इन्वेंशंस हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा गहराई में जाकर देखिए, अगर आपके नाम पर अगर 1-2 इन्वेंशन भी होते तो आप कैसा महसूस करते। तो 150 इन्वेंशंस
छोटी मोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने 20 किताबें भी लिखी हैं और 200 साइंटिफिक पेपर्स भी लिखे हैं। अगर ये कोई कलाकार होते तो वर्ल्ड फेमस होते, और ये एक साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऑलरेडी फेमस हैं। टेक ओवर। And here are some designs of him. He took him 40 years of his life to design this technology. You see him here in a real picture with his first test vehicle. And this is his latest design. This is Sky Space. And he wants to take all the factories into space without harming the environment and the atmosphere. Take over. और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो सबसे पहले जो डिजाइन बनाया था वो मौजूद है, जो ऊपर एक ट्रक है, ट्रैक्स के ऊपर, और नीचे मिस्टर अनाटोली यूनिट्स्की खड़े हैं। ये अभी भी बेलारूस में मौजूद है। और उसके साथ ही साथ बगल में इसका एक और पिक्चर उन्होंने नया डिजाइन बनाया है जो कि स्काई स्पेस के नाम से है। और ये चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी फैक्ट्रीज मौजूद हैं वो सारे स्पेस में ले जाने के लिए, ताकि धरती को एकदम हरियाली पर बनाए रखें। टेक ओवर। So what did we realize? We are a crowdfunding platform. We gathered funds for this technology, this unique technology, and I just showed you. What are the certificates and the patents all over the world? Let me show you. These are patents, like more than 130 patents from the CEO all over the world, from China to Australia. Take over. तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा स्काईवर्ल्ड के बारे में, और ये क्या है, और साथ ही साथ ये किस चीज पर काम करती है और क्या चीज ऑफर करती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हैं 130 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम चाइना टू ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमारे डिजाइनर और ऑथर के नाम पर मौजूद हैं। And he took all the technology all over the world, and it was received with open arms. People were amazed, and it is a big achievement of all of us, all the participants and co-owners, to bring this technology together with this genius into the world. From Singapore to Berlin were exhibitions, and it was an amazing experience. You see me here talking with him and two people of the National Railroad of my home country, and they were explaining how many problems they had. Take over. तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मिस्टर अनाटोली यूनिट्स्की, जो कि वर्ल्ड वाइड से दुनिया को इकट्ठा किया था अपने टेक्नोलॉजी के जरिए से। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैट जैकब्स मौजूद हैं, जो कि उनके साथ दो इंजीनियर्स मौजूद हैं जो अपने मातृभूमि से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम। और ये सिंगापुर से बर्लिन तक हुआ था एग्जीबिशन। उसमें इतने सारे लोग मौजूद हुए थे, शामिल हुए थे, और दुनिया ने इनको खुले बाहों से इनको अपनाया है, इस टेक्नोलॉजी को। Okay, and then thank you. And then you have his wife. Thank God for her, because she is the power behind it. She's the business head behind it. She's also an engineer, but she's taking care of the business. So the designer Unitsky can focus completely on the technology. She even won a certificate in 2018 of business certificates of very good business in 2018. Take over. और यहाँ पे इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि मिस्टर अनाटोली यूनिट्स्की की वाइफ है, बीवी है, जो कि सारा बिजनेस का देखरेख वो देखती हैं। और इनकी इतनी बड़ी मदद की वजह से हमारे डिजाइनर अनाटोली यूनिट्स्की अपने टेक्नोलॉजी पे फोकस कर पाए, और 2018 में इनको सबसे बेहतर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट भी मिला है।
Okay, so the production result, that means what did we achieve? We gathered so much money together with all the co-owners, and what did we do with all this money except bringing this technology into the world? Take over. तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रोडक्शन और इसके रिजल्ट, इसके जरिए से हमने कितना पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को हमने कहाँ खर्च किया, और उसके साथ ही साथ को ओनर्स हमने कितने बनाए, उनको क्या क्या फायदा पहुंचेगा। टेक ओवर। So this is our building. This is our office in Minsk. Minsk is the capital of Belarus. Belarus is a country between Russia and Europe, independent. And we have at this moment, these are beautiful pictures with all of them, more than 600 highly educated employees, from designer to engineers. You see here also all the vehicles hanging up, well, not all, but a few of them hanging above them. And you see here the engineers and the designers working in the office. Take over. और इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो कि इमारत है, ये हमारी खुद की इमारत है। ये हेड ऑफिस है यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की, और ये बेलारूस में लोकेटेड है। बेलारूस ये रशिया और यूरोप के बीच में है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और ये ऑफिस मिन्स्क में लोकेटेड है। और इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्राउंड में बेलारूस के टेस्टिंग पार्क में जो जितने सारे इंजीनियर हैं, ये हाईली क्वालिफाइड हैं, और ये सारे डिजाइन्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है और इसको साकार बनाया है। और ये डिजाइन जो अभी फिलहाल मौजूद हैं, ये रियल लाइफ के मौजूद हैं, जो अभी रेल ट्रैक्स पे मौजूद हैं। टेक ओवर। And then here is our factory. I forgot to say that the building, the office building, is complete ours, so it's not from the bank. The same here with our factory. We started with this building and we built some more side buildings because the technology grew. Take over. और इस वाली तस्वीर में आप जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग और इससे पहले वाली तस्वीर में आपने जो बिल्डिंग देखी, वो सारे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के खुद के बिल्डिंग से। इस पे कोई बैंक से लोन वगैरह नहीं है। There's a party going on behind you. आउटसाइड। तो ये सारी बिल्डिंग्स खुद की हैं, इस पे कोई बैंक से कोई लोन या फिर कर्जा वर्जा नहीं है। टेक ओवर। Okay, and then we have a test park in Marina Gorka. This is 150 kilometers from Minsk, the capital of Belarus. This was a swamp, and we made it a beautiful park with the 7 tracks, the 7 rails here. If you count them, you count 7. And with the eco house, this is the eco house, and they're also testing, of course, the vehicles. Take over. और इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये मरीना गोर का जगह है जहाँ पे टेस्टिंग पार्क है, और ये मिन्स्क से, जो कि बेलारूस की राजधानी है, वहां से 150 किलोमीटर दूर है। और इससे पहले, ये इको टेक्नो पार्क बनाने से पहले, ये जगह बहुत ही ज्यादा गंदी और एक कुछ चीज के ऐसी कुछ लायक वाली चीज नहीं थी। लेकिन जब इसका टेस्टिंग पार्क बना, तो अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेलीकेट्स आते हैं वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर पे देखने के लिए, और यहाँ पे 7-8 ट्रैक्स भी मौजूद है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये इकोलॉजिकल है, इसको साबित करने के लिए यहाँ पे मछली, फल, फ्रूट और सब्जियां वगैरह भी उगाई जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि ये बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक घर भी दिखाया गया है, इको फ्रेंडली हाउस, और उसके नीचे एक व्हीकल भी जुड़ा हुआ है ट्रैक से, जो कि विदाउट कैप है। बहुत ही रेयर पिक्चर है ये। टेक ओवर। Did you tell already from the trees and the fruit and the vegetables and the fish? Yes, I just went into flow. I couldn't stop. It doesn't matter. I heard it. Okay, that's wonderful. So yes, we have fruit trees and we have our own green garden there with vegetables, and we have fish.
and in the pond, and if delegates come to us to visit, they get fruit and vegetables from our own trees, and plants and fish from our own pond, to prove that the technology is completely ecological. So the other test park is, so we have two test park. The second one is in Sharjah. That is the university city next to Dubai, and you can take a screenshot here. If it's readable, maybe it's too small, but these are the contexts of where the test park is, because a lot of people ask me this. Take over. और ये वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं हमारा दूसरा टेस्टिंग पार्क है जो कि यूएई शारजा में मौजूद है, जो कि एक यूनिवर्सिटी का जगह भी है यूएई में। और इस टेस्टिंग पार्क में अगर कोई जाकर देखना चाहता है तो जा सकता है, अगर वहां के गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया तो। लेकिन ऑलरेडी यहाँ से 14 कंट्रीज से डेलीगेट्स आके विजिट कर चुके हैं। Okay, and then this is a picture, a very unique picture in Sharjah. You can see it's a lot of sand on the ground. This was the first putting of the first anchor in the ground. You see the double anchor is not even yet there. It's only the first anchor. You remember that all the anchors are double anchored. And this was the leaders team, where I am one of the leaders of the leaders team. And it was a very special day, a very hot day, and we were having a ball, because this was another achievement in all these years' hard work. You see here the latest cargo terminal, at cargo and passenger terminal in Sharjah, and here is our CEO very proudly showing the board that shows the way to the test park, together with the CEO of the test park. Take over. और इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिट्टी है, और ये पहला एंकर डाला गया था यूएई शारजा के सेकेंड टेस्टिंग पार्क में। आप देख सकते हैं ये सिर्फ सिंगल एंकर है, और इसमें दूसरा एंकर अभी तक लगाया नहीं गया था। और ये सारे टीम लीडर्स के मेंबर्स हैं, और ये टीम लीडर्स के मेंबर्स में मिस कैट जैकब्स भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही साथ एक और तस्वीर में दिखाया गया है कि मालगाड़ी कार्गो और पैसेंजर यात्री का वाला एक टर्मिनल बनाया हुआ है, और उसके ऊपर वाली तस्वीर में हमारे डिजाइनर एनाटोली यूनिट्सकी और शारजा के टेस्टिंग पार्क के सीईओ मौजूद हैं, जो कि साइन बोर्ड की तरफ इशारा करके दिखा रहे हैं कि टेस्टिंग पार्क के लिए इस तरफ जाना है। टेक ओवर। And we were all over the news. The new technology was all over the news, even in CNN Business and Fox News. And when we were in that news, on those news channels, we had a tsunami of mails and calls, and all the world knows now the technology. Go ahead. Just go to the previous slide. Yes, previous slide. Oh, sorry. और यहाँ आप देख सकते हैं कि दुनिया भर से सारे चैनल्स यूस्काई के बारे में बात करने लगे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ पे CNN बिजनेस नाउ और फॉक्स न्यूज वाले, यहाँ पे एक सुनामी जैसा कॉल्स और मेल्स उमड़ पड़ा था हम यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज में, इसके बारे में जानने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था न्यूज चैनल्स में। Yes, and then this is a very unique picture. Our CEO, Anatoly Unitsky, showing a certificate that we are, Unitsky String Technology is a reliable and bona fide partner of business activities in Belarus and abroad. That means that there is now a new technology existing in the world. Cars and trains and trams and monorails and trucks, and now there's Unitsky. Unitsky is a technology in the air, and it will be launched this year. Go ahead. और इस वाली तस्वीर में देख सकते हैं हमारे CEO मिस्टर एनाटोली यूनिट्सकी,
और ये इनके हाथ में जो आप एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये बेलारूस ने रिकॉग्नाइज किया है कि अभी यूज का भी एक ट्रांसपोर्टेशन है और ये कहीं भी अपने ट्रांसपोर्टेशन की चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक खुशी का दिन था और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी है। नेक्स्ट स्लाइड। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जितने भी सारे जो मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ ही साथ यूज का एक सिंबल भी आप देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि अभी ये भी एक जानी मानी ये है ट्रांसपोर्टेशन है। और इसमें आप जान सकते हैं कि ट्रक्स, रेल, ट्राम्स वगैरह भी मौजूद है। उसके साथ ही साथ हमें भी रिकॉग्नाइज किया गया है यूज का को टेक ओवर। Yes, and at this moment there are more than 50 international delegates that visit us, our test park in Belarus and the United Arab Emirates. Take over. और इस वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 50 से भी ज्यादा डेलीगेट्स बेलारूस और शारजा के टेस्टिंग पार्क सेंटर्स को विजिट कर चुके हैं। टेक ओवर। So, thank you. So where are we? Where are we in the financial plan? We are in the financial plan at this moment in 14/2. Yes, there are 15 stages. We started in 2014. That was only a design, only an idea on paper. And the investors took a lot of risk, big risk, because what would we succeed? Then after stage 8, there was no risk anymore because we already owned enough assets to pay back all the investors. And now we are at 15/2, and don't worry, the shares are still very cheap. And in this stage is the last stage, well, the stage before the last stage. So there are 15 stages. So you can still become co-owner of the technology in a very, very cheap way. Take over. तो चलिए अब हम जानते हैं कि यूज काई में क्या है और कैसे फायदेमंद है। यूज काई 2014 में सिर्फ पेपर पे डिजाइन पे था, तो 10वें स्टेज तक थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि सक्सीड हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा रिस्क था। लेकिन 10 स्टेज क्रॉस करने के बाद अभी रिस्क जा चुका है। अभी हम फिलहाल 14.2 स्टेज पे हैं। ये टोटल 15 स्टेजेस हैं। इससे पहले कि ये स्टेजेस खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और को ओनर बन के इसका भरपूर फायदा उठाएं। और साथ ही साथ कि आप कम से कम पैसों में इसके निवेशक बन के इसका फायदा उठा सकते हैं। टेक ओवर। And there are packages for every budget. You see, the smallest package is for $50 and you get already 800 shares. You even have packages to pay off in from 5 till 9 months. And yes, we are with more than 400,000 investors already. You see me here in Belarus. You see the high speed in the back, and these are colleagues of my home country who also are co-owners. Take over. और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आप कम से कम $50 से इसमें निवेश करके एक निवेशक बन सकते हैं। और इसमें 5 महीने से लेकर 9 महीने तक आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शंस हैं। और हमारे साथ ऑलरेडी 4 लाख इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मिस कैट जेकब्स और उनके साथ ही साथ को ओनर्स जो उनकी मातृभूमि से हैं। और उसके ऊपर ट्रैक आप देख सकते हैं जिस पे यू फ्लैश की व्हीकल रुकी हुई है। टेक ओवर। Okay, so what do we offer you? We offer you dividend shares in option. Yes, that is how it is called. Dividend shares are shares that gives you co-ownership. So that means that a part of the technology is yours. So if this technology makes profit, and this year we will make profit, then the dividends will be paid out every year. And this 20% of the profit goes to the co-owners.
every year, as long as you live, as long as you keep these shares on your name. Yes. And yes, if you leave this beautiful planet, you can give these shares to your children. These shares are inherited. Yes. And also many people ask me, when is the IPO? Yes, you can sell these shares if we go on the IPO, but why would you sell shares that gives you a financial future, a financial security for the rest of your life? Take over. तो आइए अब हम इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं कि यूस्काई हमें किस तरीके से फायदेमंद है। यूस्काई में हम लोग डिविडेंड शेयर्स ऑफर करते हैं, जो कि बाद में ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कैसे कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पास ऑन कर सकते हैं, और ये शेयर्स अभी भी बहुत ही ज्यादा कम कीमत में मिल रहे हैं। आप इसे खरीद के अपने पास रख सकते हैं, और आप इसके को ओनर भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ा देगा। Take over. Okay. And then what about the IPO? A lot of people ask me, when are we going to the stock market? This is because these people were wrongly informed. Our shares had nothing to do with the stock market except this. We're now in the pre-IPO. The dividend shares are still available. They're still, offered to buy. Okay, once we would go on the IPO, the normal shares, not the dividend shares, would be on the market, and people would sell and buy, sell and buy, sell and buy. Okay, the more people sell and buy, the higher the value of the normal shares, the A shares, go. Then the profit of the company would go up. And if the profit from the company goes up, the value of all shares go up too. So that means we get more money every year. That is the holy grail about the IPO. So don't mix it. We do not sell our dividend shares. We keep them as long as we live. And after that, we give them to our children. Yes, take over. Yes, thank you. Can you just go to the next slide? I'll just continue so that the continuation can happen. Just one slide above, yeah, from here. तो यहाँ पे जैसे कि बताया था कि ये शेयर्स आप पीढ़ी दर पीढ़ी भी पास ऑन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये कंपनी का 20% जो मुनाफा होगा वो अपने को ओनर्स के साथ बांटेगा। और साथ ही साथ ये आप अगर आईपीओ में डाल दें तो आईपीओ में आप बेचने की बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आप लोगों को। अगर आप बेच दोगे शेयर्स को तो आपका एक जो जरिया होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जरिया होगा, वो रुक जाएगा। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस। तो इसीलिए अभी भी प्री आईपीओ में बहुत ही ज्यादा कम कीमत में शेयर्स मिल रहे हैं, तो आप अभी खरीद लीजिए। जब एक बार हम आईपीओ में जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, ना कि अभी शेयर्स आप जैसे ही आईपीओ ओपन हो जाएगा इसे बेच दें। टेक ओवर। Okay, so let me show you a package. We have here, for example, the package of $1,000. You can buy it in one time payment, and you get 30,000 shares. Yeah, I remember when I bought shares of Tesla, one share was $46, and I sold them. These were normal shares. I sold them 84 each, and I thought I made a big profit. Now they're more than 300, but still I had to buy and sell. These are the normal shares. These are not normal shares. Yes, these are dividend shares, and you get for 1,000, you get 30,000 shares. So one share costs you 0.03 cents, 3 cents, yes, if you pay in one time. And I'll tell you more about the packages that you can pay off. Take over.
तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आप कैसे निवेश कर सकते हैं। अगर आपने मिनिमम $1000 आपने निवेश किया तो आपको 30,000 शेयर्स मिलेंगे, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा कम कीमत पर है, जो सिर्फ 3 सेंट्स में मिल रहे हैं। और मिस कैट जैकब्स अपने एक पुराने शेयर्स को खरीदने वाले एक चीज़ को याद कर रहे हैं कि जिन्होंने टेस्ला के कुछ शेयर्स खरीदे थे, उस टाइम पे उनको सिर्फ $46 में मिले थे और जब उन्होंने उसको बेचे तो $85 के करीब-करीब उन्होंने बेचे थे। तो जब आईपीओ में जाएँगे तो उसकी कीमत बढ़ती ही जाएगी। तो अब टेस्ला की भी करीब-करीब $300 के करीब हैं। तो इसीलिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी $1000 इन्वेस्ट करके भी आप 30,000 शेयर्स को खरीद सकते हैं। टेक ओवर। So here are the packages who you can pay in monthly payments. For example, the 1,000 package again, you pay off in 5 months, 200 a month. One share costs you 0.04, so 4 cents. You get 28,000 shares, and if you do a double payment, if you start with the double payment, for example 400 with this package, then you get 1,000 shares on top, so you have 29,000 shares in payoff in 5 months. Yes, take over. और इस वाली स्लाइड में दिखाया गया है कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं इसमें। स्टेबल, ये $1000 का पैकेज आता है जो कि आप 5 महीने में इंस्टॉलमेंट के जरिए से पूरा कर सकते हैं। $1000 पे आपको 28,000 शेयर्स मिलेंगे जो कि अभी फिलहाल 0.04 सेंट्स में मिल रहे हैं और आपको हर महीना $200 पे करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले महीने में 1 महीना एडवांस करके डबल पेमेंट किया तो आपको 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कि आपके 28 प्लस 1000 शेयर्स 29,000 शेयर्स मिलेंगे। टेक ओवर। Okay, so how can you become a co-owner? The person who sent you here, the person who gave you the invitation of this Zoom meeting, you need to give this person your name, email address, and phone number, so this person can connect you to our platform. This is the login. This is how the login looks like, and this is the login browser address. Please be careful if you connect to this to our platform, that you send this browser address to your email. Never Google any name like Skyway, or that was the previous name of USky or Unitsky String Technology. That's the company. Don't do that, because maybe you get on a wrong browser address and then people lose their money, and that happened before. So be careful. Let somebody guide you. Let somebody show you how to do this, so nobody can lose their money. Take over. तो यहाँ पर जानिए कि आप स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे आप नाम, अपना ईमेल एड्रेस और जिसने आपको स्पॉन्सर किया है उसका डिटेल्स दीजिए और नीचे जो लिंक दिया गया है उसके जरिए से आपको एक ईमेल आएगा कंफर्मेशन करने के लिए। और ध्यान रखिए, इसके स्काईवे के नाम से, यूस्काई के नाम से, यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के नाम से गूगल पे बहुत ज्यादा फेक लिंक्स हैं, उस पर क्लिक करके अपना पैसा ना खोएं। फ्रॉडस्टर्स बहुत हैं और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको ईमेल पे इसकी मेल आईडी जरिए। Okay, and then we have a free app, and this app you can download on Android, on your Android phone. You go to Google Play Store, and then you look for Sky World Community, SWC, and you click on install, and this is for free. This is my telephone. You can put it in English. What does it offer you, this app? The same as on your computer. You can see your shares, you can see your team, you can see the latest news, you can see the money you put on your account, or the money you got on your bonus account. And yeah, this is all for free, and you can download it on your telephone. Take over. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का एक ऐप भी है जो कि एंड्रॉइड पे अवेलेबल है अभी फिलहाल, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं।
और यहाँ पे मिस कैट जैकब्स का फोन दिखाया गया है, वो अपनी लैंग्वेज में है। ये आप अपनी कंट्री के और होम लैंग्वेजेस के हिसाब से भी, होम कंट्री लैंग्वेज के हिसाब से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वही फैसिलिटीज आपको सारे मिलेंगे जो फैसिलिटीज आप एक डेस्कटॉप पे देखना पसंद करें, अपने बैक ऑफिस में अपना मेन अकाउंट, अपना बोनस अकाउंट, और आपके टीम मेंबर्स, और आपने कितना इन्वेस्ट किया है, सारी चीजें इसमें जानकारी हासिल होंगी। टेक ओवर। And these are the official sites of our company and of the the designer and engineer, Anatoly Unitsky. You can take a screenshot and please visit our websites and see how amazing technology we offer. Go ahead, take over. और ये हमारे ऑफिशियल साइट्स के लिंक हैं जो हमारे सीईओ और डिजाइनर मिस्टर अनाटोली यूनिट्स्की ने बनाए हैं। और इस लिंक्स पे जाकर आप कभी भी चाहे तो आप हमारी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। टेक ओवर। Okay, please mute. Then we have a special on Facebook. We have a special group also on Telegram. That's the Skyworld Community India, and especially for the people of India. I know there are some people not from India, but these are all my team members, or some people who are connected with India or who live in India but from other countries. So please look for this group on Telegram or on Facebook. Take over. तो ये हमारा एक फेसबुक और टेलीग्राम का एक ग्रुप है, स्काईवर्ड कम्युनिटी इंडिया के नाम से। ये स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया गया है। इसमें बहुत सारे को ओनर्स और ये जो इस चीज से जुड़े हुए हैं यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी से, उनको इसमें ज्वाइन किया गया है। आप चाहिए तो इस पे जाके सर्च करके इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। Skyworld Community India, especially Skyworld Community India के नाम से आपको ढूंढना पड़ेगा। Yes, special for the people of India. And then I have my own groups on Telegram, Facebook, YouTube, Instagram, and it is called Skyworld New Millionaires. It started with a joke when I was talking on the inner trans with one of the people who work very close with Unitsky. He said to me that co-owners are the new millionaires of the world, but they don't realize that, they don't know it yet. And now my group in Facebook is already over 11,000 people. And I will ask Mr. Said also to assist me in these Facebook groups to communicate with people who only speak Hindi. Take over. और ये मिस कैट जेकब्स का एक स्काईवर्ल्ड न्यू मिलियनेयर के नाम से फेसबुक में एक ग्रुप है, जो कि एक मजाक के तौर पे शुरू हुआ था। जो अनाटोली यूनिट्स्की के जो कि बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा था कि जो जितने भी निवेशक हैं वो ऑलरेडी मिलियनर्स है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है। तो इसीलिए मिस कैट जेकब्स ने इस ग्रुप को क्रिएट किया, और इस ग्रुप में 11,000 से भी ज्यादा ग्रुप मेंबर्स हैं। और इस मेंबर्स में मैं भी एक हिस्सा हूं, और इसमें इंडिया से जितने भी या फिर बाहर रहने वाले जितने भी हिंदुस्तानी हैं, वो अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो मेरे जरिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। So please stay in contact with me, stay in contact with Mr. Said and other members of my team in the WhatsApp groups. You can contact me on india@skyway.capital, or here is my WhatsApp, and please become a member of one of my groups, of all of the groups, doesn't matter. You're more than welcome. आप सभी लोगों से एक तहे दिल से गुजारिश है, अगर आपको कोई किसी भी तरीके की जानकारी हासिल करना है तो आप कभी भी मुझे या फिर कैट जैकब्स को या फिर हमारे टीम के किसी भी मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मेल का एड्रेस भी दिया गया है, india@skyway.capital, और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है मिस कैट जैकब्स का। और साथ ही साथ नीचे दिया गया है फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। इन चारों के 4 प्लेटफॉर्म पे भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप जुड़कर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। टेक ओवर।
Okay, so I am responsible for India. I'm honored to be responsible for India. Please contact me. Please stay in contact with me. Now I have Mr. Said who speak other languages of India. That is a big help. If you need any help, if you need any information, it doesn't matter. I am the communication manager of the SkyWorld community platform. I am in direct contact with the board members, and I have all the answers to all your questions, even if it's technical questions, it doesn't matter. So stay in contact with me. I try to do together with Mr. Said once a month a meeting for the people who speak Hindi, and we keep you informed. We are a big family. We take care of each other because we are co-owners for the rest of our lives. Take over. मिस कैट जेकब्स से कहना चाह रही हैं कि वो इंडिया की सारी गतिविधियों को देखती हैं और वो एक जरिया है, और उनके साथ ही साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे 2-3 लैंग्वेजेस आने की वजह से इनको बहुत बड़ी मदद हासिल हुई है इंडिया के लोगों से जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ के तरीके के सवाल जवाब करने हैं टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी भी इस कंप्लीटली स्काई वर्ल्ड के रिलेटेड के बारे में आप किसी भी तरीके का सवाल उनसे कर सकते हैं। वो हमेशा आपको जवाब देने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करेंगी। और साथ ही साथ ये डायरेक्ट टच में है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बोर्ड मेंबर्स के साथ, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी से गुजरने ना देंगी। ये इनका वादा है। टेक ओवर। Okay, I will stop the recording. Hopefully next time you will be live with me, and you can ask me any question, and that's much more fun to stay connected, even if it is online, and maybe one day I come and visit you. Take over. तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने जा रही हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों से ऑनलाइन में जुड़ने की, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि किसी दिन हम लोग रूबरू भी होकर एक दूसरे से मिलेंगे। और बाकी अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने के लिए अपने आप को गर्व महसूस करूंगी। Okay, I will stop recording now. Thank you.